तो yeah, welcome Shweta, welcome Rashmi. Welcome, Rashmi and Anu. Yeah. So we were talking about our food, and Shweta is from Mumbai, and Rashmi ji is from Pune, businesswoman. Shweta is our regular person, counselor, and a deep thinker from Mumbai, and both is an assistant professor architecture from Tamil Nadu. Hello both. So we were just Hi, starting both. on that topic only कि peer pressure या healthy competition, how can we face it या how can we you know be balanced about कि competition तो रहेगा but हम लोग उससे इफेक्ट ना हो या उसको देख लें and फिर भी we can balance ourselves and also get our goals. मतलब पीछे भी ना रह जाएं और अपने आप को मोटिवेट करते रहें. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्लाइट डिस्टिंक्शन है जहां पर हम लोग अपने आप को उसको प्रेशर में ले लेते हैं और वो नेगेटिव काम करने लगता है कि हमें इनएक्शन दे दे या डिप्रेशन दे दे या बिल्कुल ही बहुत सारा ज्यादा मोटिवेशन और टू हायर एंड दे दे. So there is just a slight distinction between it, and we can be either this side or that side. तो इसलिए मुझे ये टॉपिक बड़ा लगा कि हम कुछ बोल सकते हैं इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस या समथिंग. सो इसके लिए हम ये कर सकते हैं लाइक व्हाट आई जनरली डू इज कि मैं उसको सेपरेट करता हूँ. पीयर प्रेशर एक्चुअली रियलिटी में नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन होता है. समथिंग हैपेंस लाइक मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि जब मुझे लगता है कि ये पीयर प्रेशर है, जैसे मेरी ऑफिस कलीग ने मुझे कुछ बोल दिया या डायरेक्टर मैडम ने बोल दिया कि ये काम आज करना है और प्रेशर फील करता हूँ, तो मैं उसको रियलाइज करता हूँ कि उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला है कि आज ये काम करना है, और ये सेंटेंस मुझे प्रेशर की तरह लगता है. तो जब मैं उसको रियलिटी में देखना शुरू करता हूँ कि सिर्फ एक सेंटेंस है, बस इसमें कहीं प्रेशर नहीं है. एंड सेम विद द कंपटीशन. कंपटीशन भी एक कॉन्वर्सेशन ही है कि जहां मुझे कोई सेंटेंस लगता है तो मैं वो सेंटेंस को पकड़ता हूँ कि वो क्या सेंटेंस है जो मुझे कंपटीशन लग रहा है या वो क्या पीयर प्रेशर है. और सेकंड चीज जो मैं करता हूँ वो ये है कि पीयर प्रेशर और कंपटीशन से मेरा संबंध कैसा है. बिकॉज जब मैं अपना पास देखता हूँ तो हमेशा पीयर प्रेशर ने मुझे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ही किया है, एक्सपेंशन दिया है. तो मैं अपना रिलेशनशिप, क्योंकि जब वो मुझे बर्डन लगता है पीयर प्रेशर, तो मतलब मैं पावरलेस डिसएम्पावर्ड हो जाता हूँ. लेकिन अगर वो मुझे लगता है नहीं यार इसमें तो ग्रोथ है, अगर मैं ये काम कर दूं, चाहे प्रेशर में ही सही या कंपटीशन में, हमेशा नेक्स्ट लेवल पे जाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो रिलेशनशिप ऑल्टर करता हूँ मैं. तो पीयर प्रेशर और कंपटीशन दोनों ही मतलब मैनेज हो जाते हैं. दिस इज माय टेक. वंडरफुल बोथ, क्योंकि हमें वो सेंटेंस ही, कोई सेंटेंस या किसी का कोई कुछ गोल सेटिंग ही हमें बॉदर करता है या मोटिवेट करता है. लाइक इन प्रोफेशनल लाइफ कि कोई बॉस ने कुछ कह दिया कि इतनी तारीख तक ये प्रेशर, अरे उन्होंने तो कर दिया फिर आपका क्या, कुछ इस तरह की स्टेटमेंट ही हमें मतलब पीयर प्रेशर से लगने लगती है. बट यस, लाइक इफ वी कैन डिस्टिंग्विश कि वो सेंटेंस तो जस्ट इट इज जस्ट अ सेंटेंस. वंडरफुल बोथ कि एंड आप सेंटेंस इज डिस्टिंग्विश जस्ट कर ए पा रहे हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, दैट्स इट. या बट ये बहुत, क्या बोलेंगे, एक बहुत इवॉल्व लेवल ऑफ डिस्टिंक्शन आई थिंक, क्योंकि हम लोग तो बह जाते हैं कि भाई अब बोल दिया, अब क्या होगा. वो हमारे कोलैप्स हो जाता है वो सेंटेंस. ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने ये बोला है कि वेदर यू आर अप टू इट और नॉट. वी इंटरप्रेट इट, लाइक आई इंटरप्रेट इट एज वेदर यू आर अप टू इट और नॉट, whether you're capable of it or not. Interpretation ऐसी होती है. Both I really get कि आपने उसको distinguish किया है, but sometimes it happens that way. Yeah, anybody else? Rashmi, Shweta, क्या अनु, फॉर हाँ. मी तो पीयर प्रेशर तो कुछ है ऐसा सच नहीं है. But one thing is there, peer pressure can be of any type, whether it is professional, relationships. Of course, I will say I get disturbed, but I analyze myself and then I do self-motivation. And of course, it disturbs me.
It disturbs me. I will not say that I keep it aside. No, it come inside me. Then later on, I analyze myself, and then I try to dissolve it by self-motivation, sometime by eating, like I dissolve it. But it affects me. It affects me. Right, right. It affects me whether so we are compulsively eating or, just being going in a shell sometimes. And then we come out of it, sometimes it affects and then we think and then we come out of it. But it takes time. It takes time. It takes time. It takes time. Yeah, that is a transparent and like an personal sharing. And I think my behavior is more like Rashmiji, and both seems like more of an evolved kind of an distinct thing that he has. Yeah, and it takes time for me as well to come out of that. Yeah. But what we can say is that the growth as a personality is that earlier maybe it took say 3 days. Now it can take 1 day or half a day. Yeah. And I find it healthy. I grow because of that. Yes. That you and both are agreeing on that. Yeah, it is essential in our lives. Yes. They are essential part of it. Yeah, essential. Otherwise, I will have no motivation to, grow beyond my limiting whatever potential I have thought. कि इसके potential के आगे मैं कैसे जाऊंगी? To cross the hurdles. And when you feel more confident, you are more dynamic, you are more energetic. I agree. Isn't it? Yes. And I think one should have stress and peer pressures. Healthy way to grow. Yeah. Then only. Yeah. Your mind starts working. You have your own concepts, your own track, your own, I will say, your own principles, your own dogmas. You may read something, you may listen so many things, but everyone's hurdles are different. And when you cross them, it's a lesson for a single unit. Then I find it that I'm a single unit. This is my hurdle. And it's my experience, which is entirely different. So it grows, but it helps in growing the life. Wonderful point made. Yeah. Because my struggle may be very simple and appear very very small thing for somebody else, but that's my struggle and my things to grow from. Yeah. And you draw many concepts from your stresses and peer pressures. Your clarity of life, it comes only after crossing that hurdles. Then clarity comes to your life. Isn't it, Anu? Yes. You're speaking from your life, and it makes a total like experiential that that you say that your sentences are from your experience and not bookish. They don't sound bookish at all. No, not at all. Not at all. Yeah. Absolutely. I am with you. Shweta, anything you would like to add? Yes. Yeah. So, see, for me, I think, peer pressure is a terminology which is given by the society, and ideally, we have not created it. So pressure coming from your boss, your family is slightly different than the peer pressure, because and then how do I perceive it is like peer pressure is something when somebody else's expectation is not matching with your expectation, and it is creating a sort of discomfort in you. So definitely it bothered me a lot. I have affected by this so many times. When I was very young, I was teenager, because it depends.
like how are you growing your developmental stages. So what I personally feel, peer pressure was very high for me when I was adolescent, when I started growing and then getting experience of life. It was definitely affecting me, but not on the same intensity. And how did I deal with it? Because see what happens when the pressure is created, maybe because of any sort of circumstances. It is like pressure from family, peer pressure, or pressure from anything which is putting you in discomfort. Is like you try to avoid that. This is what you try to do. You don't face the cause, rather than you just face what it is creating within you, either anger, either hatred, either maybe low self-esteem or something like that. Okay, and then you try to do something which is somewhere alleviating those sort of behavior which is induced by the stress, so you don't deal with it. So पहले हम यही करते थे कि खूब खा लिया, सो लिया, किसी से बात कर लिया, बिचिंग कर लिया. So this is how we used to deal, and I think everyone did it. Okay, so we are Yeah. nowhere bonds as a saint. Okay, so we did it. I think everyone did it. But now as we are growing, so as I definitely second what Bodh has said, that like how do you perceive that particular thing, because it is just a thing which is given by the society or maybe by your peer or something like that. But how are you taking it, and how you're perceiving that particular situation, and how you're reacting or responding. So initially we reacted a lot, but now how do I deal with it? Like I just take a pause, I just try to distinct myself to that situation, just try to understand what it is creating within me, why this emotional anger is coming in me, because do I relate to that situation, do I really identify myself? And if I don't identify, so I should not be bothered about it. So my response and my behavior to that person, and my response and behavior to me has slightly changed. I'm not completely over it, but yes, I can say that I've grown. I mean to say, like my situation when I've spoken about my family and things, it is not a peer pressure, but it is something which is coming from a family, and then you have a lot of expectation which is somewhere is not matching, but you can't do anything with that, and you can't change that person. So you need to, and you don't need to, I think, be submissive and then accept everything. You need to accept that no, this is the situation, what you can do for it, what you can't do for it, and then just grow with it. So this is what I think is something. But truly speaking, this cannot be expected by a person who is just 10-year or 12-year-old. But definitely when we are growing in our own experience, when we fall, when we I mean to say we are not able to handle the situation better, I think with that life experience we grow, and I think in that way universe also helps you. But meditation is something like when you're keeping control over your breath, that really helps you in terms of emitting a negative emotion towards you. So this is what I feel, and this is what I've experienced. Yeah. Thank you, Shweta. I think you made a very good point initially, and that peer pressure is a word. Maybe it's just peer means our own colleagues or our own, but it could be Yeah. like maybe pressure from a boss, like who's like in Yeah. hierarchy above us, or from say my Yeah. mother-in-law, or from even my parents or my siblings, and Yeah. some the expectation and my expectation is not meeting up. So that part, that when our expectation don't meet, that's the pressure that we are feeling internally. So I just share my personal experience. No, so when you are at age, so your friends will definitely ask you when you're going to get settled, okay? And then that is something. See, anywhere you go, you just tell, you go to doctor or anywhere. When they hear your age, they will write like Miss or Mrs. Okay, so that used to create a lot of, I mean to say, anger in me. कि ये क्या nonsense है? क्या क्या 30 के होंगे तो married हो जाएंगे, 25 के होंगे तो unmarried होंगे. So because this is how society, I mean to say, sees to it. बट पहले मैं बहुत एंगर, मतलब मैं रिएक्ट करती थी. पहले तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाती थी, मैं अपने आप में ही गंदा फील करती थी. बट देन थोड़े टाइम के बाद देन जैसे जैसे ग्रो करना शुरू किया, देन रियलाइज हुआ कि नो यार, दे आर डूइंग देयर ओन पार्ट, यू डू योर ओन पार्ट ना. यू कांट change them, but you can change your response. So whenever
आई गो टू एनी डॉक्टर, बिकॉज अभी तो कोरोना में नहीं होता है, बट अभी जब भी जाना पड़ता है, जैसे ऑफिस में ही है तो पूछेंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, व्हाट योर हस्बैंड डज, सो आई क्लियरली टेल नो 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 आई एम नॉट मैरिड, आई एम सिंगल. ओ यू आर सिंगल, यस आई एम सिंगल. सो अभी अभी वो चीज फर्क उतना नहीं पड़ता है. मैं अभी भी बोलूंगी उतना नहीं पड़ता, बिकॉज द वे, बिकॉज गुस्सा आता है उनके ऊपर कि क्या उनको सर्टिफिकेट मिल गया है क्या, बिकॉज उनके 2 बच्चे हो गए, वो मैरिड हो गए, तो एवरीवन शुड बी मैरिड. बट अब वो उतना एंगर नहीं होता है. ये एक पीयर प्रेशर होता है. जैसे एक होता है ना, हम किसी के साथ जा रहे पार्टी में, दे आर ईटिंग नॉन, अरे यू आर नॉट ईटिंग नॉन वेज, यू आर नॉट ड्रिंकिंग, अरे दिस इज माई विश. सो दिस इज हाउ आई मीन टू से पीपल give a lot of pressure to you, and then how do you accept it? That I think is like something which I think that you may be able to relate to it now. Yes. Yeah. I can relate to all that single things. And now it's a matter of, great joy when I have to tell somebody कि मतलब जैसे कारपेंटर कोई मैं किसी को अपने घर पे मतलब कुछ काम देती हूँ तो बोलते हम साहब से बात कर ले क्या पैसों के बारे में. मैंने बोला यार कोई साहब नहीं आएगा. अरे अनु, इस पे से मुझे ध्यान आया, इस पे से मुझे, जैसे मैं रिक्शे में आती थी ना बॉम्बे जॉब में, अनु बोला करो, ढूंढते रह जाओगे, करो बात साहब से. फिर मैं तो बहुत फनी होते, मैंने बोला मुझे ही नहीं पता कौन साहब है तो मैं कैसे. नहीं, कभी कभी अनु पता कैसे होता है ना, कभी कभी कैसे होता है आप ना, मतलब मेरे को 1-2 इंस्टेंसेस, जैसे रिक्शे में आ रहे हैं, अभी क्या होता है, अभी इतना लंबा ट्रैवल करना पड़ता है मुंबई में, 1-1 1.5 घंटे आप रिक्शे में बैठे हो, तो एक्सचेंज ऑफ कॉन्वर्सेशन तो होता ही है, लाइक 1-2 स्टेटमेंट, अरे भैया आप कहाँ का रिक्शा है, क्या है, तो वो उस पे से थोड़ा सा बात शुरू हुआ. अरे मैडम आप गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते, अरे मैडम सर तो अच्छी कंपनी में होंगे, अरे आपको और सर को मिला के तो बहुत अच्छा सैलरी मिलता होगा. तो कभी कभी आप रिएक्ट करते हो, फिर कभी कभी आप बोलते हो कि आप उसको अवॉइड करते हो, बिकॉज उनको समझा के कोई मतलब नहीं है, बिकॉज दे वोंट अंडरस्टैंड इट. सो एट टाइम्स आई लीव द कॉन्वर्सेशन देयर. वो बोलते भी है साहब, मैंने कहा है साहब. सो एट टाइम्स वो कभी कभी दिक्कत भी होता है कि यार व्हाई यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग, बट not for satisfying them, but it's like क्यों वो पढ़ना है वो डिस्कशन में, so I avoid it. I mean to say that वो टाइम टू टाइम कुछ कभी अवॉइड करना, कभी हंसी मजाक. पर आई रिमेम्बर दोस डेज जब है ना 25 वो बोलते हैं कि मतलब या आई हैव गॉन थ्रू दैट थिंग आल्सो from colleagues from everywhere. So I can laugh right now, but it was quite painful that time when I was in the 20s. Yeah. truly किसी के पास जैसे स्टूडेंट होते हैं, किसी के पास अच्छा कॉम्पोस्ट बॉक्स होता है, तो वो भी एक पीयर प्रेशर, अरे यार उसके पास कितना चमकीला है. तो वो अनु जब मैं बहुत मतलब अभी भी मोटी हूँ, इससे भी ज्यादा पहले मोटी थी, तो मुझे 6 सीट वाले नहीं बिठाते थे, क्योंकि कहते थे मैडम आपको बिठाएंगे तो हमारी 2 सीट का पैसा वो हो जाता है. Seriously, this happens. कि आप 2 सीट की जगह ऑक्यूपाई करते हो, तो वो मुझे बिठाते ही नहीं थे. No, this happens. And I don't know किस ये लोगों को लिबर्टी कैसे मिल जाता है, बिकॉज आपके उससे मुझे ध्यान है, मेरी एक कलीग है, उसको ना उसका फर्स्ट बेबी डिलीवर हुआ, उसके बाद कुछ तो गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, तो उसका जो लोअर टमी है ना, इट रियली गॉट, आई मीन टू से वो बहुत ज्यादा, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं होता, तो वो अलग ही मतलब डी शेप लगता है. तो अभी इनिशियली मैं ट्रूली मेरे लिए भी बता, जब फर्स्ट व्हेन आई सॉ हर, I was not making any sort of, I mean to say, but I was thinking that कि क्या इसको कुछ हेल्थ इशू है क्या, बट चलो देन उसके थोड़े टाइम के बाद when I was coming ना, हम फील्ड विजिट पे गए थे. सो जब हम वापस आ रहे थे तो हम डहाणू गए थे, तो डहाणू से आने के लिए हम कैब वगैरह नहीं ले सकते, हमको लोकल में ही आना है. तो एक लेडी तो उसके पीछे ही पड़ गई, अरे तुम प्रेग्नेंट हो गया, फिर प्रेग्नेंट नहीं हो तो ये क्या प्रॉब्लम है. एंड सीरियसली मतलब शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग, बट थोड़े टाइम के बाद मुझे लग रहा है यार उसको बुरा लग रहा होगा, तो मैंने उसको बोलना शुरू किया. मैंने कहा कि सी यू लीव इट ना, अभी उसको कुछ हेल्थ इशू हुए होंगे, मैंने कहा आप जान के क्या करोगे, मैं सबका अपना इशू होता है. एंड शी वाज सिटिंग कीप क्वाइट, उसने कुछ भी नहीं बोला. वो लेडी जब उतर गई तब मैंने उसको बोला, मैंने कहा क्यों नहीं यार तुमने बोला क्यों नहीं. बोले ये लोग ऐसे ही होते, बोले आई एम यूज्ड टू ऑफ इट. सो वही होता है ना, बिकॉज ये सारा सब चीजें देख के फिर आपका डीलिंग का वे अलग हो जाता है. यू एक्सेप्ट द थिंग्स, आई मीन टू से यू पॉजिटिवली एक्सेप्ट द थिंग्स रादर देन आई मीन टू से नेगेटिवली. किसी ने बोल दिया तो ठीक है दबा के रखा, तो वो वाला एक एक्सेप्टेंस अगर हमारा हो जाता है ना,
कि ठीक है, मतलब that is the situation, I understand, I accept it and I love my body that way. So I mean to say yes, it happens, and वो हर every moment होता है, every moment होता है. So thank you. I'm going to Yeah. stop the recording and we can just talk. Okay. Yeah, thank you. Thank you. I think we got the thing, and now I'll thank you for sharing from personal. I think Shweta's personal things made this whole thing very real. जब हम लोग बोलते हैं ना peer pressure, so it is not some kind of big word, but it is all these small things, like